لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد इनके मुताबिक ये अमेरिकन को बच्चा ये डॉक्टर भी माशाल्लाह बन गए हैं, बहुत से रेजिडेंसी कर रहे हैं, लेकिन बाकायदा कुरान हिफ्ज़ किया है और पाकिस्तान से आने की बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत शायद आपको बाद में पता लगेगी। डॉक्टर उस्मान as loud as I can. I apologize if someone can't hear me. Just let me know if you're having a lot of difficulty in the back when I do speak. I'll try to cover that. بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى سبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم आपने 3 टाइम ट्रैवल के ऊपर ट्रस्ट किया, आप सबका बहुत बहुत हम लोग हज के ऊपर इंशाल्लाह जिस तरीके से ये प्रोग्राम आपने यहाँ पर बहुत सारे ये 4 और 5 प्रोग्राम के अंदर शामिल हैं, ये माशाल्लाह कई 100 लोगों का ग्रुप है। ऑल टुगेदर वी आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ ओवर 500 पीपल और इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम अपना मैं ट्यूसडे को जाऊंगा, मोस्टली वीज़ों का प्रोसेस शुरू हो रहा है। यहाँ पर आप सब लोगों को इसलिए दावत दी है
कि यहाँ पर अब आपके जितने सवाल हैं वो सवाल आप अपने यहाँ पर इमाम मौजूद होंगे, डॉक्टर उस्मान भी मौजूद हैं, इसके अलावा इमाम शुएब साहब हैं। मैं इमाम शुएब साहब से गुजारिश करूंगा, ब्रदर उस्मान, ब्रदर इमाम मोहम्मद अजीज शुएब, could you come please on the stage? I would request brother Hassan, he is one of the group leader, to join me over here. Brother Asif, Sayyid Asif, दोस्तों, तेरे मोहतरम बुजुर्गों, बहनों, भाइयों, वीक टाइम ट्रैवल से आप लोग 3 साल से टिकटें बाई कर रहे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगा कि उन सब लोगों को मैं यहाँ बुलाऊं, 1 मिनट के लिए आप इनको देख लीजिए, ये कौन लोग हैं। यहाँ पे बहुत सारी स्टेटों से लोग आए हैं जो करीब की स्टेट्स थी, लेकिन आज हमारा प्रोग्राम भी हो रहा है, वहां पे एक डिफरेंट इमाम उसको कंडक्ट कर रहे हैं। कल एक सैन फ्रांसिस्को में हुआ और कल फिलाडेल्फिया में भी एक प्रोग्राम होगा जिसको डिफरेंट इमाम कंडक्ट कर रहे हैं। सरफराज हमारे एक मैनेजर है टिकटों के, टिकटिंग डिपार्टमेंट के। सलमान मौजूद है यहाँ, इरम मुशीर, देखने में तो ये अभी भी बच्ची लगती है, लेकिन तकरीबन 18-20 साल से हमारे साथ मुंसलिक है। जावेद साहब, अमजद साहब ब्रुकलिन के मैनेजर, महबूब साहब बंगाली के एक्सपर्ट, वही साहब शिकागो के मैनेजर हैं, वो यहाँ नहीं आ सके हैं। मदिया से अक्सर बात करते हैं, आज वो लॉन्ग वीकेंड मनाने गई हैं। समिया वर्जीनिया की हैं, वो भी नहीं आ सकी हैं। अशरफ साहब लॉन्ग आइलैंड के मैनेजर हैं, आज वो भी नहीं आ सके। हनीफ साहब, ये हाफिज़ कुरान है माशाअल्लाह, ये भी तशरीफ लाए हैं। हनीफ साहब जरा हाथ उठा कर दीजिए, जाते हैं अक्सर प्रोग्राम्स में हज के ऊपर। ये सारे लोग मुख्तलिफ वक्तों में हज पर या उम्रे के पैकेजेस लेकर जाते हैं साथ में। हमारे यहाँ से तकरीबन 3 या 4 मरतबा गाइडेड टूर्स होते हैं, जिनमें अक्सर पसंद और जकिया जी जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट खातून है, क्योंकि आपके सारे पैसे इनके पास आते हैं और फिर आगे नहीं। Brother Usman, you say a few things about the Hajj. We started. I think if I keep it back. الحمد لله فائض الأنوار وفاتح الأبصار وكاشف الأسرار ورافع الأستار، والصلاة والسلام على محمد نور الأنوار والسيد حبيب الجبار الغفار ونبي القهار وقاطع الكفار وقادح الفجار وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين الأخيار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى
كل ضامر يأتين من كل فج عميق. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As Uncle Zakir was saying, I apologize for the shortcomings of the mic, but alhamdulillah, it looks like everybody's here with good intentions. So may Allah subhanahu wa ta'ala grace this gathering with blessings, barakat nazil farmaye, और हम सबको सफर के आगाज को हमारे लिए आखिरत का एक सम्मान बन जाए. I might do a mix in Urdu and English. I know most of us मुझे जो महसूस हो रहा है कि ज़्यादातर हमारे मेरे बुजुर्ग जो हैं वो हिंदू बात से ताल्लुक़ है उनका. I think majority, maybe everyone in here उर्दू समझ आ जाती है सबको. I don't want to leave anybody out. They're going to the Hajj and they have trouble understanding Urdu. So I'm going to do it. Try to cover a mix. Is that okay? With everyone? Okay. I first would like to thank Uncle Zach, our team, Peak Time Travels and Tour. It was a pleasure of my own. 2010, I was asked to represent, and we led a very large group of Hajjaj to the Hajj. It was an honor for me, one of the most memorable moments of my life. I had gone to Hajj multiple times. Hajj when I was a young child, but Umrah, alhamdulillah, many times जाने की मुझे सादत हासिल बहुत हुई थी. लेकिन वो हज का एक ऐसा मेरा ट्रिप था कि उस पर मैं अगर आज भी गुफ्तगू शुरू करूँ तो शायद यहाँ हम सारी रात बैठे रहें कि कितना मज़ा आया था. और वो एक ऐसा, it was for us, for the team here and for the team that's going, it's about serving. You know, I understand that dunya mein people think that there's reasons, but the pleasure I received on serving was unimaginable. Yes, you hear things, you know, you have to go through things. ये ज़हन की जो बातें अभी मैं शायद थोड़ी सी clarify करूँगा साथ से कि Allah subhanahu wa ta'ala Quran पाक में सूरह हज, there's multiple मुख्तलिफ सूरों में हज का जिक्र आया है, लेकिन एक पूरी की पूरी सूरत जो है 22वीं सूरत जो है in the Quran, it's referred to, the name of it is Surah Hajj. So the ayah which I had the privilege of reciting was the 27th ayah of Surah. Allah subhanahu wa ta'ala ne Ibrahim alayhi salam ko, see the story goes a little bit, I'm going to try to, it's a very large story. अगर आपने इस पर थोड़ी सी ना तवज्जो दे के सोचना शुरू करें, like everyone in here, I imagine that this is one of the most important moments of your life. Hajj itself, it's such an important pillar, एक ऐसी फाउंडेशन है हमारे ईमान की कि आप लोगों ने ये कदम उठाया है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला इसमें बरकतें अता फरमाएगा. इसके साथ साथ जो है ना कुरान पाक में कई मरतबा अल्लाह ताला फरमाता है जब भी कोई नेक अमल करना शुरू करे ना आदमी तो ये तफक्करून, उस पर फिक्र करे, सोचे. Start rationalizing, thinking about what you're about to start. So that's what I want to do today, is I just want to at least throw a seed down. मुझे उम्मीद है कि सबके ज़हनों में ये seed होगी, लेकिन कोशिश ये होगी कि मैं उसको ज़रा ताज़ा कर जाऊँ अपने लिए and for everyone as well. ये एक ऐसा कदम है कि सबको पता है, बच्चों को everyone knows that there are 5 pillars in Islam that we refer to. The Prophet ﷺ referred to as the stooge. You see how these pillars are holding up this roof? Without the pillars, the roof would not be able to stand. We wouldn't have the structure.
So the Prophet ﷺ illustrated to us that there's 5 pillars within Islam. Right? Many of us know these pillars in Islam. One of the pillars, right, is Hajj. Right? Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Baqarah, right, He says, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Allah subhanahu wa ta'ala ने इस आयत से कुरान पाक में, it's the 97th verse of Surah Al-Imran, Surah Baqarah, Surah Al-Imran, यहाँ पर फर्जियत इसकी हुई थी इस आयत पर. There is an almost unanimous decision in the 7th year of Hijrah. सरकार अलैहिस्सलाम का मदीने पाक में तशरीफ लाने के बाद जो है, is 7th year after coming to the migration and forming the government of Medina Munawwara is when Hajj became farad. See, the origin of this is so vast. So what you're about to go into, जहाँ हम अभी जिस दुनिया में दाखिल होने लगे ना, इसकी origin is vast. It is such a long history that it goes back thousands of years. Adam Allah subhanahu wa ta'ala ने भेजने के वक्त, when he sent Adam, he had asked him to make a house, right? Hudan lin-nas, right? He said, make this house, and this house hudan lil-alameen. ये जो मकान होगा ना, ये घर, ये दीवारें जो होंगी, ये दीवारें जो है वो आलमीन को हिदायत पहुंचाएंगी. आदमी इस पर जरा सोचे तो आदमी खुद ही इस पर हैरान रह जाता है. You ponder, what do you mean कि दीवारें जो हैं वो आलमीन को हिदायत पहुंचाएंगी? You know, the concept जो उलमा ने बताया है, जो उन दीवारों का ताल्लुक जिनके साथ होता जाता है ना, वो एक हिदायत की ऐसी रोशनी लेके आते हैं कि वो आलमीन को रोशन कर जाती हैं. You know, it points us to the direction of hidayat. From our messengers, from Adam alayhi salam all the way to the Prophet alayhi salatu wasalam, all the messengers came to this house. That in itself, जो कहते हैं ना बाद में आएगा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, कभी अगर मायने को आप समझ जाए ना, तो आपकी दुनिया जो है वो सिर्फ हज की वक्त नहीं, वो मरते दम के लिए it will change. That's the concept, is when you're going to go to this pilgrimage, when we leave, हम जो बाल नहीं मुड़वाते, we shave our heads. The concept is to leave as if you are a newborn. You say labbaik, कि I am here, मैं आ गया हूँ. किसको कह रहे हो? Allahumma labbaik, eh Rabb, Ya Allah, I am here. You know, ulama के नजदीक, people used to say these days, ask this question कि यार हम अपने अगर गिरबान में आदमी मुंह जाके देखें ना, तो किस मुंह से कह रहा है कि यार अब मैं आ गया हूँ? You know, that's the कैफियत. ये कैफियत जो है ना, जहाँ से ये शुरू होता है ना मैदान, आपने जिस वक्त से ये नियत बांध लिया कि मैंने हज पर जाना है, उस दिन से सवाबों का जो एक ढेर है ना, वो आपके पल्ले पर लगना शुरू हो गया है. You can't even imagine that every second of yours, whether you are breathing, whether you are sleeping, you are within the confinements. हज के दायरे में आप आ गए हैं, और सवाब इसका जितना है वो अल्फाजों में आदमी इंसान जो है वो किसी जुबान में बयान नहीं कर सकता है. You cannot calculate the rewards that you are gathering just by making this intention. So the concept needs to start building here. The number one concept when you make this is sincerity. Innamal a'malu binniyat. Everyone has heard that hadith where the Prophet ﷺ has said that actions will be judged upon intentions. जो अमाल है वो नियत पर जो है ना, उन पर जो है ना सवाल जवाब होगा. So the intentions need to be sincere कि मैं करने क्या जा रहा हूँ. What am I about to do? आदम अलैहिस्सलाम ने मकान बना दिया, हिदायत के लिए ये बना है. So that goes down thousands from the Old Testament. Some say 7,000, some say 8,000. Thousands of years ago this house was built.
after this Nuh alayhi salam ka tufan aaya, the structure of it, the foundation of it slipped off. Ibrahim alayhi salam comes years later and builds his house with his son Ismail alayhi salam. They built it on its structure, the same structure that Adam alayhi salam had built. This entire story जो हज की जो उलमा ने बयान किया है, 1400 years of scholars have talked about this, it's a story of love. ये एक प्यार का रिश्ता है. जिस तरह अंकल अक्सर ऐसा मैंने कभी इनके before I heard it from him, I had never heard it. अल्लाह का फजल है कि मैंने बड़े बड़े उलमा के कदमों में बैठी कि मुझे सआदत हासिल हुई है. लेकिन मैंने ये जो इनसे अल्फाज मैं उनको नहीं बोल रही, ये सारे लोग मुझे याद है कि हम कफन पहन के जा रहे हैं. If you realistically ponder upon that, that's what we're kind of doing. सफेद दो कपड़े होते हैं. आदमी जिस नियत से निकल रहा है ना, कि जिस साफ दामन से आदमी निकल रहा है, इसी पर आदमी अपनी रातें गुजार जाए ना, हज जाने तक आप इसी पर आप रातें गुजार लें कि यार मैं कफन पहन के इसी नियत से मैं जा रहा हूँ और फिर मैं बोलूँगा मैं आ गया हूँ, तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी. So what's going on? It's a story of love. इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हुक्म दिया, उन्होंने तामीर कर दी. He built the house, right? But Allah subhanahu wa ta'ala is saying that around this house, bibakkata mubarakan, I have made this entire haram, this city, I have put barakat here, right? Inna safa wal marwata min sha'airillah. There's so many ayahs. These are monuments of Allah subhanahu wa ta'ala. And why are they monuments? It all comes down to the same thing. It's a story of love between the Creator and His creation. Allah subhanahu wa ta'ala ne jo labbaik ka lafz hai ki मैं आ गया हूँ. It goes back to another verse of the Quran where Allah subhanahu wa ta'ala ne tamam insanon ki, He gathered all of the souls of mankind, right? And many of the scholars say it is on the mountain of Arafat. जो Arafat का मैदान है, उसमें तमाम every one of us in here, every one of us that has come before us, every one of us that will come after us, everyone's souls were gathered, and Allah subhanahu wa ta'ala asked them, everyone, do you believe me as being your creator? तो सबने जवाब उस वक्त दिया था क़ालू बला. Every one of us, every single one of us had replied to Allah subhanahu wa ta'ala and said, yes, we believe you as the Lord. So the scholars कहते हैं कि आप अपना जो आपने अरवाह में आपने वादा किया था, अब आप इस दुनिया में उस वादे की वफा के लिए, उस वादे को निभाने के लिए आप वहां जाके कह रहे हैं कि मैं आ गया हूं. मैंने वादा उस वक्त किया था, अब मैं उस वादे को वफा करने के लिए, उस वादे को निभाने के लिए, to acknowledge in my own presence I am coming. Now the question is, यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि इंसान तो बहुत गुजरे हैं, इस दुनिया में भी हैं, आपके जानने वाले में भी ऐसे हैं जिन्होंने उस दिन वादा जरूर किया था क़ालू बला, that we do believe. लेकिन कुछ लोग आपके जानने वाले भी ऐसे हैं, you know people who have passed away and weren't fortunate enough to go to Hajj. इसलिए फरमाया वलिल्लाहि अला नास हज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला. This is, we're making Hajj fard, but only upon those who are able to financially be able to come and complete this fard. Hence, you, every single one of you in here have been chosen by Allah subhanahu wa ta'ala. ये कोई ऐसी सआदत है कि मैं अल्फाजों में आदमी बयान नहीं कर सकता है कि सरकार अलैहिस्सलाम, the Prophet अलैहिस्सलाम has said that if anyone has the money, the resources to go to Hajj,
and does not go to Hajj. These are very strong words that I'm about to finish. कि अगर किसी को सआदत वो मिल जाए, किसी के पास वो अल्लाह ताला ने ज़राए वो पहुँचा दिए, वो दे दिए, बख्श दिए, सआदत उसको मिल गई है कि उसके पास वो माल वो रिसोर्स मिल गए उसको कि वो हज पर जाए. He has the resources to go to Hajj but does not go and dies in that state. The Prophet ﷺ said it is dying as if he died as a Christian or as a Jew or non-believer. To die in that state is as dying as a non-believer. For those who had it, ये नहीं कि जिसके पास आया, जिसके पास resources उसको माफ है. For someone who had it and जितने बाहरी स्टेटमेंट ये है, the amount of weight upon that statement, उस बाहरीनेस को आप देखें तो आप उसका opposite भी देखें कि जिसको सआदत बख्शी भी हो, जिसके पास रिसोर्स हो भी और वो जाए भी, उसकी क्या शान होगी. यहाँ तक हदीसें, there are hadiths, like I have a very limited time here, but I'm trying to build a mindset. There are narrations upon narrations upon narrations. हदीस बड़ी बड़ी है जिस पर ये जिक्र आ रहा है कि भाई हज से जो आपने बचपन, मैंने तो अपने बुजुर्गों से सुना है, पहले मैंने अपने बचपन में भी थोड़ा देखा था, लेकिन मुझे यकीन है for the people that are sitting in here, whether you're from India, from Pakistan, from Africa, from any part of the world, when we were young or you've heard from your elders, जब कोई हज पर जा रहा होता, if they would be leaving for Hajj, the entire village or the entire city would get together and see them off at either the boat station, at the bus station, or the train station. जो जा भी ना रहा हो, if they weren't even going, the entire village would get so excited for that person that they would go to see off that person. वो ज़हनों में कैफियत आपने अपना वो बनाई कि यार, the day you made the intention is the day this started from. And like I said, nothing but freebies. उसके बाद जो है ना, आपको बाहरें आ जाती हैं. यहाँ तक कि हदीसें भी आती हैं कि whoever goes to Hajj, right, you come back and you'll get wealthy. उलमा ने इस पर बहस की है, can be wealthy meaning you're financially, you'll start getting barakat in your businesses, in your health, but also your iman. कि हज पर वहाँ जाए आदमी नेक नियति से जाए, right, and comes back, Allah subhanahu wa ta'ala की बारिशें शुरू हो जाए. You can't even imagine कि किस तरह बहारें जो how it's going to build this entire circle around you. It's nothing but rahmah starts coming your way. And it starts from the day you start and the entire journey. Every qadam, every step you take, every breath you take, every single word you take, going there, it's going on the focus. पहले ज़माने में नियत बनाने के बाद से आदमी शुरू हो जाते थे. लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक. In your house, you're going to work now. If you start this now, I can promise to you कि आपकी खुद जो है रूहानी तौर पर your status will change. If you don't believe me, try it. Try it from the drive home from today. Start saying labbaik Allahumma labbaik. Hawa ke liye agar aadmi sharminda hai, if you're a little shy, start saying it in your heart कि labbaik Allahumma labbaik. मैं गारंटी से बोलूं नहीं, अगर I'm nobody, ये कुरान और हदीस ने मुझे वो ईमान दिया है कि I can confirm to you that you're going to start changing if you're sincere. The key, remember, I'm going to finish on this in a few minutes, is the key is sincerity. Niyat jo hai. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ. Allah subhanahu wa ta'ala jaan bhi zikr hai. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. In the Arabic language, the word lillah means that you are about to take this trip, Hajj or Umrah, for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. ये में रखना होगा किसके लिए ये कदम उठा रहे हैं. That is the fundamental basis
of this entire journey of Iman, anything, of roza, namaz, zakat, your iman, is for who you are doing this for. That is the key. So सवाब शुरू होता है चलने पर, मैंने कहा ना कि रहमतों की बारिशें हो जाती हैं. Like a rain falls on you. You go to Makkah, each good deed that you do in Makkah, you get 100,000 rewards for it. Imagine that. We can sit here for days and days and we can't even count up to 100,000. Like, I'm serious. I can easily, confidently say nobody in this room has ever counted to 100,000. तो एक सवाब पर आपने किसी के लिए दरवाजा खोल दिया, किसी के लिए आपने किसी को रास्ते में गुजरने पर आपने सलाम दे दिया. यार वहां पर there will be millions of people there. Officially there will be 3, 4, sometimes officially up to 5 million people there. But when you're going to go, it's such a beautiful sight. You're going to see people that have literally gone by foot from Egypt. You heard of everyone. Some guy from, I think, Ukraine or Bosnia went by foot last year or a few years ago. From where? Bosnia. From Bosnia. उस आदमी की ज़हनियत की कैफियत पर आदमी अगर सोचना शुरू कर दे तो आपके दिन गुजर जाए कि यार वो कैसा जज्बा होगा उस आदमी के पास. 13 months, imagine that. लेकिन बारिश शुरू हो जाती है. Doesn't matter. He says, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Allah subhanahu wa ta'ala says that we will be going up, you're going to be going on camels by foot. It doesn't matter how. You're going to be taking various different ways of getting there. From plane, by road, by bus, by water. 100,000 rewards per good deed. You smile to someone. एक मुस्कुराहट आप किसी को, एक smile will give you 100,000 deeds for a smile. But that also, every good thing, आपको उसकी सारी जाविया देखने पड़ते हैं. 5 million people there. 10 million people it could be. That means that when you're walking in a small city like Makkah or Medina Munawwara, it is almost guaranteed that you will be walking in the street and it's going to be cramped. That means it's guaranteed when you're going to be doing tawaf, on your first tawaf, on your final tawaf, or when you're going to be in Mina, when you're going to be in Muzdalfa, when you're going to be in Arafat, कि ये इसमें कोई शक नहीं है कि आप गुजर रहे होंगे कि तो शायद किसी का कंधा आपके कंधे के साथ लग जाएगा. It is guaranteed that when you're going to be walking, there is a very big chance that someone's shoulder will hit your shoulder. Someone's foot will step upon your foot. And we're all human. This is the goal here, is to go there और खुदा से कहना कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक मैं आ गया हूँ. अपने गिरबान के अंदर you look at your own soul and you say that I have come. और फिर वो वक्त भी आएगा अल्लाह का नसीब कराएगा कि you're going to be standing between the door of the Kaaba and the Hijr Aswad Maqam al-Muntazim. You're going to be standing at that place where the Prophet, the Messenger, the Beloved of God, जो जन्नत बांटेगा, वो शख्स अलैहिस्सलाम जो है वो फरमाते हैं कि वहां पर stand there and cry for your deeds. Cry, grab onto the wall there and cry your heart out and ask for Allah subhanahu wa ta'ala's forgiveness. वो ज़बान कहती है जिसने गुनाह, जिसको it is impossible for him to commit sin, is telling us grab the door, grab that area and ask for forgiveness. When you stand at that place and ask for forgiveness, don't forget when we're going to be walking those streets of Makkah, जहाँ पर गुनाह जितनी बड़ी आपको बरकतें, the amount of pleasure, the barakat that you will be bestowed upon on those streets, where you would do even a smile and get 100,000 rewards for
word. Banki ulama have written that 100,000 is just to put a number on it. When such a big in the Arabic language, when the Prophet ﷺ or someone in grammar uses long or very large numbers, that means that it is so vast कि हमारे हिसाब में नहीं है कितनी बड़ी. Walk with your eyes down so you could be looking for that ant and make sure that you don't step on that ant as you're walking. Isliye that is an area, could be, if you don't look for that ant, ulama think you should be so mesmerized in the thought of Allah subhanahu wa ta'ala, labbaik ke upar aap apne gum ho jaye. I am here, that get you lost. You get lost in your own sins. अपने गुनाहों पर आदमी जो है वो उसकी ज़हनियत जो भाग जाती है. You get lost और खुद ही आंखें जो है वो शर्म के मारे नीचे. Your eyes fall out of your own. You get so shamed of being in front of Allah subhanahu wa ta'ala. Your eyes drop. I'm not trying to scare anybody. What I'm trying to tell you is be cautious. You need to be cautious of where you're going. You need to understand there's going to be millions of people there. People that are going, like we know about our countries. I'm not saying all of our countries. Over here at least there's some civilized things here. But even here, if you go to motor vehicle, what happens? Most of the motor vehicle offices here, it's chaos. It's not because there's a system there, it's because there's so many people show up on that morning. So the day you leave the airport from here, when you get to the airports over there, it is going to be chaos. Imagine that. Arafat ke maidan mein khuda janta hai. My favorite part, we're going to get to that. I'm sorry if I'm taking long here. But one of my favorite parts of Hajj is Muzdalifah. It was my favorite. And what happens there is every single one of us, whether you are a king of a country or whether you are someone who doesn't even have a job and was blessed to go there and walk there from the state, from Africa or from anywhere, you will all be laying down on that ground that night. There won't be tents. There's not going to be, and what's so beautiful about it is that he actually makes you not just sleep on the ground. It's a reality check. हमारे English में कहते हैं reality check. आदमी को अपना जरा जमकर, you get like a little wake up call. कि ना सिर्फ आदमी पहुंचे, you get there and it's chaos. Millions of people. Right? But then what's so beautiful, Allahu Akbar, he makes you get down on your knees. वो घुटनों के बल पर गिराता है और कहता है अपने हाथों से इस मिट्टी के अंदर से पत्थर निकालो. You get down on the ground and you start looking for stones. Because the next day you have to go throw them at the devil. What is Ismail? When Ibrahim started putting the pillars, with who? With his son Ismail. Now, there is a call. At that time, Allah subhanahu wa ta'ala asked Ibrahim, وَأَذِنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. Call people to go and perform Hajj. Ibrahim was saying, at this moment, so many thousands years ago, who are the people living there? Nobody. In the desert, who am I going to call? Then Allah had just to tell him, وَأَذِنْ بِالنَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا. They are going to come with their on foot or on their feet. Of course, when I was so small, they told me that people going to Hajj, they go by their feet. And they say somebody went from Bosnia that way. يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ, with any means of transportation. يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍ, I make the kid from every farthest area that you can think of. Leaving the United States to that place by air
you are going to spend almost a day. That one for sure. If you take a flight here to Amman, a flight here to Doha, a flight here to anywhere in the Middle East, before even you get to Medina, trust me, you have spent about 12 hours already. Now to talk how to get to Medina. Now, you and I, we have taken you to Medina. Get you to Medina, what is next? Of course, some of you will be in Mecca. For those who are going to Medina, which is mostly what we have in the program, Medina first, we have some that are going also to Mecca. For those who are going to Medina, when we get to Medina, of course, you have to go with your niyyah. The niyyah, an-niyyatu qabla al-amal. Your niyyah, your intention before anything, because you shall judge by your intentions. Dear brothers and sisters, then there is al-Masjid al-Nabawi, the house that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the house of Allah that belongs to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, is called Masjid al-Nabawi, that the Masjid of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And any deed done in that, you get 1,000 reward from any other masjid except Masjid al-Haram, which is 100,000. The brother was saying earlier that it's not numbers. 1,000. Then there is ziyarah that you need to. You can't get to the Masjid al-Nabawi, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, without visiting his qabr. You have to visit his qabr. Next to his qabr, Abu Bakr was buried there too. Next to Abu Bakr, Umar also was buried there. You need to go to do the salam. Don't forget, in between, by the time you get to the masjid, make sure that you are in a state of purity. At least your wudu al-ghusl before you go to the masjid. If you get there at the time of any fardu salah, pray the fardu salah with them. If you get there without the 2 rakah, and inshallah start the visitation. And there is a place there which is called a rawda. And that rawda, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, between my house and my member, there is rawda, one of the Riyadh al-Jannah. Then that place, everybody try his own best to pray there. What's the best time to go? Trust me, go at least 2 hours before Fajr, 3 hours before Fajr. I'm just giving you these tips. Go, you have an opportunity to get there. For the ladies, they have specific time, because the entrance in Masjid al-Nabawi in Medina, the entrance of the ladies are different from the entrance of the men. From the entrance of the men. So for the ladies, ask them when they open the rawda, or also the visitation of the place of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so that you can schedule yourself to visit that place. And inshallah, we are going to be with the team. And whoever is coming with us, inshallah, at every step you will be guided. And inshallah, at every step, my brother Siddiqui and also the team members will find papers and books that will help you also to understand what we are talking. Dear brothers and sisters, by finishing in Rawda, there is Baqi. You need to do that ziyarah too. If you go to the Baqi, that's another cemetery where some of the Salihin, people of Allah, were buried. There is also the ziyarah at Al-Uhud that you need to go. Masjid al-Quba, you need to go there, because these are the recommended visitations. There are some other masajid that you could visit. Masjid al-Qiblatain, the 2 Qibla, because the first Qibla was at Jerusalem and the next one was at Kaaba. Dear brothers and sisters in Islam, and also there are so many other visitations, inshallah.
they will put you through as soon as you go. Trust me, Siddiqui, I, Asif, Hassan, we can't take the whole group. We just have to tell you what to do at a certain time, then somebody will be the leader. Makkatul Mukarramah, they want to put a house there. Then وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ, we showed Ibrahim, we choose Ibrahim to be the one to build the house, and we showed him that house. By showing Ibrahim that house, what is his mission? Tahirul Li-Ta'ifin, purify my house. Li-Ta'ifin, for those who are going to make tawaf. Al-Aqifin, those who are going to stay long doing itikaf. Al-Qa'imin, those who are going to stand in prayer. Al-Ruka'i Sujud, those who are going to bow and do prostration to Allah subhanahu wa ta'ala. As we say, your Islam is not complete, dear brothers and sisters, if you didn't perform Hajj. Your Islam is incomplete, especially when you have the means to go. Then alhamdulillah, you have been chosen, you have to rejoice. May Allah make that day a reality, inshallah. Dear brother and sister, Ibrahim and Ismail, as the brother said, is Yarfa. Ibrahim is Yarfa Ibrahim al-Qawa'id al-Bayt. What Ismail? When Ibrahim started putting the pillars, we have three types of Hajj. Three types of Hajj. One is called Tamattu, Al-Qiran, Wal-Ifrad. The best of it all, that 90% or more do attend, is a Tamattu. The Tamattu, you do the Umrah, you do the Hallul, that means you stay like people of Mecca. When the 8th of Zulhijjah comes, you put on your Ihram again from your location in Mecca. By so doing, do I have enough time? Continue, others. Okay. Because I feel that what we are going to do, I will round it up. Inshallah, we are going to be all together. And Usman with us? Come with us? Yes. Okay, inshallah. I know that I'm not the most learned I will know that so many people also, inshallah, we have ustaz, imam, or those who have good foundation of Islam. Please, we need also help over there so that we can educate more. You can get more educated so that you can do the Hajj according to Sunnah and also the way of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear brothers and sisters in Allah, there are, okay, let's say you came to Mecca, you are in your Ihram, then next thing we are going to Tawaf. At-Tamattu, as I say, is you perform Umrah, you take away your cloth, and also by the time on the 8th of Zulhijjah, you wear your Ihram again. All of us are heading to Mina, from Mina to Arafah, Muzdalifah, back to Mina, Jamara, Tawaf al-Ifada, you come back to Mina, you stay from the 8th, 9th, 10th, 11th, 12th. If you like, you can even stay on the 13th of Zulhijjah. By the time you finish the 13th of Zulhijjah or the 12th of Zulhijjah, your Hajj is okay. Your Hajj is finished. Don't exhaust yourself while you are in Medina, my brothers and sisters. Don't exhaust yourself, because the real time that the Hajj nusuk, because that's what the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, that take from me your Hajj right, the way I did it. So we have just to do it according to the Sunnah. We have just to really educate ourselves that much. So by the time, dear brothers, you are for the Tawaf, keep talking. For the Tawaf, yes, you come, the Tawaf, we have to teach you how just to do the Tawaf. Definitely, the Kaaba has to be on your left side. You have to start from the Hajar Aswad. You
you are starting from the Hajar al-Aswad by saying Bismillah, Allahu Akbar. Then you will do the 7 Ashwad, the 7 Tawaf. So by the time you finish that, the next thing you have just to do, find a way towards Maqam Ibrahim. If you can kiss the Hajar al-Aswad, why fine. If you can't kiss, Bismillah, Allahu Akbar is enough. It's enough. And they have told us what really not to do. Don't push somebody. Even they push you, don't push somebody. You don't want to spoil your heart for only one reason. Man hajja hadha al-bayt. Whoever goes to that house and perform Hajj and he didn't do a record that seeking for intercourse, we can't take the whole group. We just have to tell you what to do at a certain time. Then somebody will be the leader of the small team just to do that. If I have to be in front of like this team now, we are almost 50 or more here. It's not going to be easy really to manage. So we want to see that way. You don't have to say that, oh, they take us there, they don't tell us what to do. No. So we should understand that also from now. Dear brothers and sisters, after we spend how many days we want to spend in Medina, we have to move to Mecca. Now, how many of us here are the first time Hajj, Hujjaj? Just raise your hand. You are first time. Who? So all the rest, like they must have gone before. I want to believe that, inshallah. So that is not new to you. So as the first Hajj, there are 4, what do you call it? 4 arkan, 4 pillars of the Hajj. There are other wajibat obligations that we have to. So one of them is the ihram. And before you take in the ihram from Medina, you have to go to what is called al-miqat. Al-miqat, that's where all the people coming from the Medina environment do wear their ihram. The ihram is that 2 pieces of cloth that men wear. You have to wear without anything. That makes you the doctor, the non-doctor, the businessman, the most wealthier, the one that is sponsored, everything is on the same level. This one of the things that you will pick in Hajj. Now, by getting to the miqats, we all have to start with the talbiyah. Before you wear your ihram, make sure that if you want to your nails, cut it. If you want to use the perfume as a man, before you wear the ihram, you can do that because you have just to be in ghusl. You don't do that after, no. Any other thing, you don't have to do any other thing than to concentrate. Your mind, your body, your soul, everything has to be what? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika laka labbaik. Inna alhamda wa ni'ma wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لا شريك لك. Then you are responding to the call of Allah by saying what? لبيك اللهم لبيك. Oh, here Allah, here I come. You call me. You know earlier they say wazin fi nas bil hajj. Ibrahim was doubting. Allah said just leave that one to me. Those who will come, you will see them. Trust me, now in Saudi Arabia, they have to see the quota that will come in. If it's left for everybody, there will be more than 10 million that will be going. So you are saying, here I came Allah. Labbaik la sharika laka labbaik. Here I came, there's no any other God save you. Inna alhamda, all the praises, gratitude, thank is to you Allah. One ni'mah, the blessing, also to you. One mulk, the dominion is to you Allah. La sharika lak, there's no any other God save you. Takbir. That's what you will be saying. Please, dear brothers and sisters, I don't know how in Urdu, don't say. You spend so much money to live here all the way to that place, then you slack down. Don't slack. There's a lot of reward in it. Wallahi tallahi summa billahi al-azim. He said it and I'm repeating it. If you go to Hajj and you didn't see a positive change in your life, find
go back again. Wallahi, wallahi. This is testimony with the people that left last year, the year before, the year before, the year before. They come back and say, subhanallah, I put 99 things in my list. And Allah did the 99 before even the end of the year. So many people. So if you go, my dear brothers and sisters, you come to like seeking for intercourse or evil deed, indecencies, raja'a or kharaja raja'a kayawmi waladatuhu ummuhu bima'na al-hadith that he's going to come back as a new baby. Wal hajj al-mabrur laysa lahu jazaa illa al-jannah. The hajj that is accepted according to the way of Allah and the way of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, there is not any reward for you except Jannah. So for that, you need to be extremely patient. You need to be very extremely patient. Inshallah, they say we have just to take a break for prayer. In the 2 minutes now, I will just round up so that they give the program to somebody else so that I don't come. And unless you want me really, I know that there will be question and answer, so we may be really able to, that's what it is, dear brothers and sisters, inshallah. Go to Hajj with a good intention, forgive whoever you want to forgive, ask for forgiveness, whoever has a debt, something entrusted to you, make sure that you fulfill all this trust, tell them that this is your money, I owe you. You don't go to Hajj with a credit card. You don't borrow money to go to Hajj. Liman istata'a ilayhi sabila. You have to have all the means. Leave your house, your family, also in peace and security. Make sure that everything is fine before really you embark on that journey. Inshallah, we all have just to go in one brotherhood. One brotherhood. We have to help each other. We have to be our brothers' keepers. We have just to teach ourselves the best thing possible. Asalullah. Now I'm explaining everything starting from here to Hajj and come back. Inshallah, we have 4 groups. 2 groups go to Mecca first and 2 groups go to Medina first. First group go to Medina first. It's traveling from here the 23rd September or 24 or 25. There are 2 groups. The first group go to Medina, reach there in 24. Second group reach Medina in 26. This in Medina, the brother Asif or brother Sheikh Imam Aziz, they can wait with everybody in the airport and get buses ready for you. Bus from airport to hotel, it takes around 30 minutes or 35 minutes only. Because Medina, it's not like Jeddah. The other 2 groups coming to Mecca first, it's going first one, it's for Salah to Medina. People go to first early, leave from here in 14 or 15 September. Spend in Mecca and after that go to Medina for 10 days. But when you leave Jeddah, also in Jeddah, in Jeddah airport, it takes 7 to 8 hours in airport to finish your documentation. You should be patient. Sometimes, maybe within 1 hour, 2 hours, 3 hours. But sometimes it takes 2, 7, 8 hours. Should be patient. And the buses take also to Mecca. After that you come. This for people. Jeddah airport, it's around more than 50 airlines from okay? And come to Mecca, inshallah, you can spend to take the walk. You should be in flight if you didn't make ihram started in flight. We should make ihram in flight. Come right to Mecca. Okay? And when you come to ihram and Mecca and spend 4 days there and go to the Medina. This is the first group for Mecca. Second group which arrives there in first Zulhijjah 25 or 24 September. Coming to first Zulhijjah.
spent there on 5, the day number 5, moving to Aziziyah. Near from Haram, it's around 18 to 20 kilometers. And also near from Mina. Buses come to take you in 7th Zulhijjah night. Take all people to Mina. Spend in Mina. First day, it's the Yom Tawriyah. All people there in Mina. And make all the prayer in that day, Qasran only, not Jama'ah. Okay? And spend the 7th day in the morning, go to Arafat. Arafat, early morning up to sunset. We stay in Arafat, and my people, when Salat al-Maghrib coming, I'm not take people and rush it to Muzdalifah. Because Muzdalifah no tents. I'm waiting with my between Maghrib and Isha after rush and take our to go to Muzdalifah. In Muzdalifah, we spend all night, except older people. Buses come to them, take them around 1 o'clock to Mina back. And all buses coming early morning to take all people after Fajr. Go to Mina again and started to throw Gamarat. For the first day, it is Gamarat Cobra. Second day, 3 Gamarats. Second day, 7 Gamarats. Cobra, Wusta, Sobra. And the second day again, also the same, up to 12 of Zulhijjah. Some people like to stay up to 13 Zulhijjah. We have buses to move you in 12 and 13 to move you back. Even if you are in Aziziyah or in hotel in Mecca. Okay? And people which on hotel in Mecca, in day number 14, this is a day for them. They need to make tawaf, al-ifada and the tawaf, al-wada' together, to prepare themselves. Bus coming and take them from 8 and 9 night to come back here. And people which could come to Mecca first, they need to be ready in 14 Zulhijjah early morning. Buses come to take them to Medina after Hajj, inshallah. Okay? And after spending in Medina, we have also flight from Medina and us flight from Jeddah. Any question? Ask me. Responsible to finish your passport. All passports, we have the list for what airline he take it when he come back, and we prepare all the list of everything that passes for you to take you from everywhere to there. Even from there to Mina, we want everybody knows what passes come to them. And also from Mina, back to airport. In question was and after that, going also from Jeddah in Medina long time. I don't want people upset. So that I've never do that. Everything I do the best way. I'm Medina. Go to Medina, join the area with them. We'll be waiting for the airport. We go in 10 days to go to the bus. It's going to finish with people in that and go to Medina, waiting people in the airport. Inshallah. And we will be with you, inshallah. Aziz was me. मैं आपको बता दूं कि यहाँ से जो लोग जद्दा जा रहे हैं उनको हम जद्दा या तो एमिरेट से लेकर जा रहे हैं या इत्तेहाद है या टर्किश एयरलाइन है, कुछ लोग सऊदीया से भी हैं,
वो सारे के सारे मक्का जाएंगे, जद्दा उतरेंगे, वहाँ से बसर में जाएंगे। कोई ना कोई एयरपोर्ट पर मौजूद होगा जो आप लोगों को अरेंज करेगा, वहाँ पर आपके पासपोर्ट ले लिए जाएंगे और सबसे आखिर में आपके पासपोर्टों पे हज ड्राफ्ट लगे हुए होंगे जो आप ही लोगों ने हमें दिए हैं पैसे, उसका ड्राफ्ट बना कर लगाएंगे, सबसे आखिर में वो निकाला जाएगा। बराए मेहरबानी उसको निकालिएगा नहीं हज ड्राफ्ट, तो वो स्टाफ निकलेगा। उसके बाद जब आप बाहर आएंगे तो वहाँ मुअल्लिम आजाद होंगे, उसकी तरफ से वहाँ पर जो बसें होंगी एक आपको और आईडी मिलेगी। एक तो आईडी हम आज आपको दे रहे हैं, आपकी आइडेंटिटी आपको दे रहे हैं, बुक्स आज दे रहे हैं, एहराम दे रहे हैं, खवातीन के लिए मामे दे रहे हैं। जो चीज़ें होंगी अब वहाँ पर आप नाम पुकारेंगे एक एक आदमी का, आप हाथ उठाइएगा, हमारे वॉलंटियर हमारा स्टाफ खड़ा है, वो आपकी टेबल के ऊपर आपका बैग पहुँचाएगा। तीन टाइप हैं हज के, एक हज तमत्तु है, एक हज किरान है, एक हज इफराद है। उन्होंने इस पर थोड़ा सा जिक्र पहले किया था। हाँ, उसमें जो है ना हज तमत्तु जो है ना, इनमें तीन किस्में हैं। हज किरान जो है पहले ज़माने में ये होता था कि लोग जो है जिस तरह वो बाज़ियों से आदमी निकला था, अगर वो चाहता, कुछ लोगों के इरादे होते थे, उनकी तमन्ना होती थी कि हम आराम जो है आराम आप एक हुर्मत में आ जाते हैं। जो हालत आराम होती है, आप एक कैफियत के अंदर आपके लिए जो है ना बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस आपको लग जाते हैं कि आप बाल नहीं काट सकते, आप साबुन नहीं लगा सकते, नाखून नहीं काट सकते, परफ्यूम नहीं लगा सकते। उसमें बहुत सारे शराइत के अंदर आप महदूद हो जाते हैं। तो कुछ लोगों ने, चूंकि शरीयत हमारे लिए आसान बनाई है, उसकी स्टेप्स accommodate us. So हज किरान एक ऐसा हज है जो आपको आप जहाँ मर्जी से शुरू करते हैं, यहाँ न्यूयॉर्क से शुरू करते हैं, आराम आप अपने घर से बैठे जो है ना बांध के नींद करके आप निकलेंगे। लेकिन जब तक हज किरान ये है कि जब तक हज नहीं होता आपका वो एक ही हराम चालू रहेगा। तो बहुत लोगों के लिए वो जरा प्रॉब्लममंद होते थे, they find it difficult to do that, extremely difficult to establish that. There's some extra rules. उसमें ये किरान के अंदर आपको एक जो तो आप देखेंगे कुतूब उसको बोलते हैं। आप जब आप पहुंचेंगे मक्के शरीफ इंशाअल्लाह, तो आपके ऊपर लागू है कि आपको एक तवाफ उम्रा कुतूब करना पड़ता है। तो हज तमत्तु में ये है कि आपको उस आराम, जब आप निकाह से आराम बांधेंगे, तो जब आप मक्के शरीफ आएंगे, आपका जो पहला उम्रा जो अपना जाती उम्रा होगा और हज कुदूम का जो उम्रा है ना, वो एक ही बार आपका काम हो जाएगा। आप तवाफ भी करेंगे, उम्रा करेंगे, आपका अपने बाल काट के आप फारिग हो जाएंगे। ठीक है, जो हज किरान में है इट्स डिफरेंट, आपको दो मरतबा करना पड़ेगा। इसकी क्लैरिफिकेशन हम अलहदगी में दे सकते हैं। अगर कोई आदमी जिसकी ख्वाहिश हो या औरत हो जो हज किरान करना चाहे, तो बाद में भी आपके पास अभी टाइम है, इस पर गुफ्तगू, इस पर सवाल जो आप कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन आपको इसकी बड़ी डिटेल में, शरीयत है, हर चीज़ डिटेल में लिखी गई है, वो आपको बता सकते हैं। हज इफराद जो है, जो लास्ट वन ऑन द कॉर्नर हियर, वो फॉर लोकल्स है। अगर लोकल आदमी को उनको जो है ना, you don't really have तो कुर्बानी नहीं, so it's for local. Hajj tamattu is something that the majority of the people do. उनको कुर्बानी भी करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप पहला मक्के शरीफ आपने जाना है, कुछ लोग अबू धाबी पर हैं, कुछ लोग इस्तांबुल में रुकेंगे, कुछ लोग जो है मेरे ख्याल दुबई में रुकेंगे, वहीं से लोग ज्यादातर अपना आराम बांध लेते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि आप किसी से आपको बाथरूम आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आप जद्दे के अंदर आप अपना बांधना चाह रहे हैं, तो उसमें ये आसानी है, आपको ये नियत करनी होगी। इसलिए निकाह तक आप गुजरेंगे ऊपर से जहां से आपने अबू धाबी में या न्यूयॉर्क, शिकागो, जहाँ से आप निकल रहे हैं, वहाँ से आप नियत करिएगा कि मैंने जद्दे जाके मैंने अपने पैसे बदलाने हैं, जद्दे जाके मैंने सिम लेनी है, जद्दे जाके मैंने कुछ चीज़ें करनी है, तो वो अपनी जाती नियत आपने खुदा से ये करनी है कि मैंने जद्दा जाना है, कुछ काम है मेरे जाती।
उस काम के बाद आप वहाँ एयरपोर्ट में बेशक अहराम आप वहाँ बदलें और आप अहराम वहाँ बांध सकते हैं, लेकिन नियत करना आपको जरूरी होगा। ये लोगों के लिए जरा इट्स मेक्स इजी फॉर देम टू डू। So you do the slaughter के बारे में, slaughter everyone has paid, I think. The payment has been made. आपकी जो कुर्बानी होगी, आपने कुर्बानी के पैसे आप दे चुके हैं इसी पैकेज के अंदर, you pay वो गवर्नमेंट को देते हैं। गवर्नमेंट ने एक बहुत वसी प्रोग्राम वहाँ बनाया है, very large program. They have miles and miles of where they bring animals and they sacrifice them. What they do is वो जिस वक्त आप मुजफ्फर से वापस आ जाएंगे, जब आप जमरात के वक्त आएगा इसमें आएगा, वो जब शरई तौर पर इजाजत होती है कि आपकी कुर्बानी जो है उसमें लागू हो गई है, वो लोग उसी वक्त करेंगे। टाइमिंग उन्होंने सेट रखी होती है, मेरे ख्याल में उन्होंने लास्ट स्लॉट रखा है 10 बजे तक। वो 10 बजे सुबह के बाद जो है वो होगी, नाम उनके पास लिस्ट में लगे होते हैं and they do it accordingly। तो आपके जितने भी अरकान हैं वो स्टेप वाइज सिंक्रोनाइज तरीके से वो पूरे होंगे। अहराम के कुछ एसेंशियल्स जो हैं जो इन्होंने इसमें डाले हैं, अहराम के अहराम में हियर सैंडल्स भी आपको वो देखने होंगे जो आप सैंडल्स के अच्छा I'm sorry, सैंडल ये याद रखिएगा, सैंडल आपका जो पैर का माथा है ना, the top of your foot, that should not be covered completely. So you can wear like this is just chappals they put any, कुछ अपने देसी जो होते हैं जो अंगूठे में आ जाते हैं दो तारे टाइप, वो बीच से खाली होते हैं, sandals, that's fine as long as you do not cover the complete surface of the top of your foot, okay, so it makes it easy। कोई भी खुली जगह दरमियान में हो, आप दूसरे सैंडल जो जवान टाइप पहनते हो ऊपर से वो वेलक्रो टाइप साइड पे हेड टू फुट बंद होते हैं, you can get that, some people have flat feet, but just जो आपका माथे में उसमें कुछ खुली जगह, पर्सनल क्लोथ्स आप लोग जानते हैं, हराम तो आपने बांधना होगा, modesty is key and you know wear something that is शर्म और हया का, जिसमें कोई doesn't you know that you have an idea of modesty and you're containing modesty, so make sure your personal clothes are with you, take it, I mean everybody's traveled pretty much, उससे अंदाजा हो जाता है आपको कितने सूट, मैं तो नहीं बताऊंगा कि आप कितने सूट लेके जाएंगे, you know ये कितना जो है ना, मेरी अभी नई शादी हुई है, मुझे भी पता लग गया you know देखिए क्या होता है। So with every outfit there's a different version, you can do that, it's up to you, but it's not recommended, इसलिए जल्दी जाना है। Umbrella कुछ लोग रखते हैं इसलिए सन धूप पड़ती है, you can bring an umbrella so you can cover the sun, you know, so you won't be you won't get sunburned, some people do that। Money, make sure you keep your money on you, try to get those belts or those bags लेके आए जो आपके साथ लगे हो। Unfortunately, जैसे I was telling you before, there's going to be millions of people there, and unfortunately, there will be people there that come to steal your money. You know, you might find that shocking, लेकिन ऐसा होता है, लोग आपके पास आएंगे, हो सकता है मेरे साथ हुआ, लोग आएंगे और बोलेंगे कि भाई हमारे बच्चे जो है अल्लाह हो सकता है सही होंगे, जो है उसका हाथ कट गया, हमारे पैसे आप दे दें, you know, काम ऐसा होगा कि आदमी को खुद आदमी परेशान हो जाता है कि मैं क्या करूं, you know, so you have to be smart, everybody is on their own person, that's a judgment you have to make on yourself। Do not be rude, याद रखिएगा आप किसके लिए जा रहे हैं, खामोशी अगर रखना चाहते हैं आप खामोशी नहीं, किसी को बुरा भला कहने की मतलब जो उलमा में लिखा है आप अपना हक ज़ाया करने वाली बात है। Passport and plane ticket, make sure you keep your plane tickets, जिस तरह अंकल अभी कह रहे थे, बहुत सारी चीजें आपके पासपोर्ट के ऊपर लगाएंगे, फिर तरतीब भी लगाएंगे, they're going to put stickers on, your pictures on, there's going to be 10 different things। Do not remove anything from your passport, they will put a lot of papers on your passport, you do not want to remove anything। वो हर
हर जगह की मुख्तलिफ पैसेज होते हैं, आपके बस के पैसेज होंगे उसके अंदर, मुख्तलिफ स्टेप्स पे हैं, wherever you go from Jeddah and they're going to take them out and will be done accordingly. Vaccination cards जो है आपके लगे होंगे, साथ ही I think लगे नहीं है, make sure you do not remove that. Prescription medications, ज़्यादातर you have 5 million, 10 million people from all walks of life coming there. Throat infection is like a sogat. I don't know if that's a word I should use, but you know there's a very large chance, there's a very probability that you will get a throat infection. It's common. So if you have a local doctor, अपने doctor जो आपका पाकिस्तानी देसी या मुस्लिम हो, take maybe a azithromycin का एक course ले जाए, take something with you. At least मैं अपने पर्सनल में बता रहा हूँ जो फायदेमंद चीज, आपको महसूस हुआ गला खराब हो रहा है, उसी दिन नमक के गरारे इस्तेमाल करें. It's medically proven to help you, so do that. Pani, make sure you're drinking water. You don't want any, we have the cases, people get dehydrated. Namkeen pani, make sure you're fully hydrated throughout this process. So ये भी ना सोचना, कुछ देसी लोग हमारे बुजुर्ग लोग ये भी करते हैं कि भाई शुगर की खैर अल्लाह को छोड़ दो, आज नहीं खाएंगे, ऐसी भी गलती ना कर. ब्लड प्रेशर की दवाई आपने लेनी है, आप ब्लड प्रेशर की दवाई के मुताबिक लीजिएगा. Sunglass will strap, people wear these cameras, people have cameras. We are not responsible for these things. कैमरा का ये है कि कुछ शर्तें ऐसे होते हैं, आप हरम में कैमरे ले जाए, वो आपको मना कर देते हैं कि आप कैमरा ना करें. So it's up to you. Majority people have it on their phones के बारे में नहीं करते हैं, कैमरा आप ले रहे हैं, इतना तंग भी करते हैं, लेकिन it's up to you again, on your own. Safety pins is a good thing to have. हराम पर लोग बांध लेते हैं, कहीं गिर लेता है, so that's a necessity. These are some things that you should take with you. पाक कुरान अदब का महफूज खातिर, अदब का ख्याल रखते हुए लोग अपनी जेबों में रखते हैं, उसका अदब जो है वो is most important. आजकल लोगों ने कुरान पाक का अदब को बिल्कुल ज़हन में नहीं रखते, ज़मीन पर रख देते हैं. हज ना खराब कीजिएगा. अगर लोग कोई काम कर रहे हैं जो आपने सारी उम्र सुना था कि ये काम नहीं करना चाहिए, आप फैशन के तौर पर होना शुरू कीजिएगा वहाँ पर, इसलिए things happen over there, so be careful. Portable water, I guess, take your thermos, take your water bottles with you. Again, cold medication, sore throat के लिए I always had some cough drops with me. Take some cough drops with you. One जो मर्दों का आराम है, again उसके 2 pieces होते हैं, there's 2 pieces. अनसों किसी ने भी कपड़ा ना हो, आप रैप अराउंड करें, एक ऊपर एक नीचे. तरीका ये होता है, वहाँ सर्दी बसों में एसी वगैरह होता है, आप बिल्कुल चादर की तरह उसको ले सकते हैं. अहराम के ऊपर जब आप तवाफ करेंगे, तवाफ के लिए पहले 3 चक्कर हैं. अभी टाइम कम नहीं है, लेकिन ये बड़े मजेदार हमारे वाकयात हैं, इनकी वजह से ये रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे. सरकार अलैहिस्सलाम के हमारे साथ जो मुशरिकीन मक्का थे, उन्होंने जब हम फतह मक्का हो गया था, उन्होंने ये इजहार किया था अपनी ट्राइब्स के अंदर कि ये लोग बड़े कमज़ोर हैं, मदीने पाक में उनको ना खाना मिलता है ना पानी मिलता है, बिल्कुल कमज़ोर हो चुके हैं. ऐसी कौम है जो मिस्कीन कौम है जो आ रही है. तो फतह मक्का वाले जिस जो है हमको ऐसी तो नहीं है, तो आपने तमाम मर्दों को ये हुक्म दिया था कि पहले 3 जो चक्कर होंगे, you have to remember this, to have the best तवाफ, जो सबसे अहसन तवाफ आपका होगा, पहले 3 चक्करों में आपको अपना दायां कंधा जो है मर्दों को वो खुला रखना होगा, जिस तरह ये पिक्चर में दिखा रहे हैं. ये सरकार की वो महबूब थे ना, तो उनकी हर आपको क़यामत तक अल्लाह ताला ने महफूज रखा है. जिस तरह मैं अर्ज़ कर रहा था, हज इज अ वेरी, इट्स अ लव स्टोरी. जितने भी ये अरकान हैं, ये खुदा और बंदे की कुर्बत के लिए ये जरिए हैं. जितना सफ़ा मरवा कर लिया, मैं थोड़ा सा टच करूँगा. दिस इज ऑल ड्यू टू अ वुमेन्स चाइल्ड सर्चिंग फॉर व्हाट Allah subhanahu wa ta'ala love that action so much. क़यामत तक के हर मर्द औरत को ये हुक्म कर दिया है कि तूने उसी के तरफ भागना होगा इन मैदानों में. तो ये अदाएँ थी जो अल्लाह ताला हमें, जो कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं रिचुअल्स जो है वो इस्लाम में नहीं. These are all rituals जो हम अदा कर रहे हैं.
तो तवाफ का ये है कि आपको मर्दों को पहले 3 चक्कर जो है, और वो ये किताबों में लिखा है, for the best सवाब आपने अकड़ के चलना होगा. These people still do it, like pose, like you're walking around and you're showing your shoulders. ये उनको दिखाने के लिए एक अदा थी कि हम अपने जाने अभी तक हैं हमारे पास. So you're going to do 7 stations. एक किताब दी जा रही है आपको इसके अंदर, जिसमें सारे तफसीलात से लिखे होंगे हर जितने भी rules and regulations है. उसके साथ साथ it's a lot of things to memorize. So that's why I'm going through this quickly. There will be qualified scholars going with you, जिनको हर चीज जुबानी याद है, उन्होंने बहुत हज किए हैं, हर मरहले में वो आपका साथ देंगे. So don't be impatient. There's going to be a lot of people there. Everything should be covered, and don't hesitate to ask questions. Just like Uncle Garrett, if you have questions, you can ask them. You know, asking questions is half of your iman. So when you're going there, make sure if you have a question, ask him. If you're अगर इंटरनेट पर आपको थोड़े बहुत सलाम दुआ है इंटरनेट से, go home and search these things too. Another major thing, बहुत सारी औरतें मर्द वहाँ पर जाके they get extremely tired and they get completely they get extreme cases of exhaustion takes place. It happens to a lot of people. बहुत लोगों के साथ ये हो जाता है. तो हम सारे माशाल्लाह यहाँ जवान हैं, अभी टाइम है, अभी से अपने मोहल्लों में, if you have a treadmill at your house, I'm really serious. You should start to walk. एक प्रैक्टिस बना लें. आप ट्रेडमिल में कुछ मिनट गुजारें यहाँ पर. It is going to be a life experience. Okay, so make sure ये मिकात के locations हैं. There's different types. जो जहाज से जब आदमी जिस आदमी की जो ख्वाहिश हो कि वो अभी आप इस्तांबुल या अपने घर से वो आराम बांधना चाहे, वो जिस वक्त आप जहाज से गुजर रहे होंगे, हज की जो फ्लाइटें हैं वो आपको ऐलान कर देंगे कि आप मिकात से गुजर रहे हैं. And they will tell you, they will let you know. People get up, and if you feel like they're not going to tell you, air hostess को आप जाके बता सकते हैं कि भाई मिकात जब गुजरी आएंगे मिकात के जरिए हमें इन्फॉर्म कर दें. So there's some nice air hostess, they come and inform you. मदीने पाक से भी आ रहे होंगे. There's going to be several different stations. वहाँ भी सब आपको वहीं रोके जाएगा बस जो मदीने पाक से आ रहे होंगे. बांधेंगे and then you go forward from there. This is what I was talking about before. Something जो आपको हर आदमी को ये जो है ना ये ज़ुबानी याद करना चाहिए. This is something very important. और इसके मायने में आपको उर्दू में मिल जाए, आप उर्दू में देखें. इसके मायने पर जरा गौर कीजिएगा. मैं इस पर तफसील और नहीं कर सकता हूँ, there's time, but you know you're coming to show them कि मैं आ रहा हूँ, मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ, giving that pledge. And another thing you're coming back for, जो एक खूबसूरती है इसमें, जब अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल की थी हज की फजीलत पर, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मायने ये है कि इलाहा हज का. तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुदा से अर्ज की थी कि मेरी आवाज़ ये किस तरह सुनेंगे सब, किस तरह मेरी आवाज़ पर हज. तो रब ने फरमाया ये मेरा काम है, जो आवाज़ दे उनको बुलाना मेरा काम है. इसमें आता है 1400 साल के उलमा ने इस पर इत्तफाक किया है कि आलम अरवाह में जिस आदमी ने क़यामत तक हज किया है, जब औरत ने हज किया है, उस दिन जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया था, every single person who has gone to Hajj had said labbaik. Souls had said labbaik. Hajj की उसने 40 मरतबा labbaik. So it's an honor again. You have to keep that in mind. Tawaf again. There was a very nice brother here who made a very intellectual comment. I answered this. Why 7? Why was the number 7 prescribed for us to go? Many scholars and very दानिश्वरों ने अपने अपने ख्यालात इज़हार किए हैं कि भाई 7 आसमान है, 7 दिन है, उसकी वजह से 7 एक महबूब दिन है. It's been a very blessed number and it's been chosen for a lot of blessed things. Is that the reason why we do 7 tawafs? I do not know, and I don't know if anyone can say with complete certainty. But that's an idea which could possibly
Arafat is the eastern wall. Eastern wall है ये आपकी ईस्टर्न में मशरक, ये मशरकी आपकी जो दीवार है जहाँ हिजर अस्वद है। हिजर अस्वद जो एक पत्थर है जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम के साथ भेजा गया था। इसके कमालात के ऊपर कमालात ये थी कि और इसकी जो किरणें जो उससे रोशनी फैलती थी वो मीलों के इन टाइम ये आज जो है वो काला पत्थर, तो वो लोगों के गुनाह जो हदीस में आता है कि लोगों के गुनाह को जज़ब कर लेता है। जब आप बैतुल्लाह शरीफ को अलविदाई सलाम कर रहे हो, जब आप आखिरी सलाम कर रहे हो बैतुल्लाह शरीफ से अलविदाई, तो आप जरूर एक अब अरबी में करें, उर्दू में करें, किसी जुबान में करें। अरबी में अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना अल-औद। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे कि बैतुल्लाह को देख के उसको मुखातिब होकर आप कहना और अल्लाह से कहना कि अल्लाह मुझे दोबारा यहाँ लेके आना। तो ये नियत जरूर आप कीजिएगा, वो सुनेगा जरूर। और इसको देख के इसकी तरफ इशारा कर हिजर अस्वद को देख के सरकार अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे कि इसको देख के अरबी में दुआ है जरूर होगी कि अरबी में आप उर्दू में भी जरूर, अरबी में सबसे अफजल है कि आप अपने उर्दू में कह देना कि या अल्लाह मैं इस पत्थर को गवाही देता हूँ इसके सामने कि तू एक ही रब है जो लायक है, जो इस वर्दी ऑफ वर्शिप, और रहमत आलम अलैहिस्सलाम जो है वो आपके पैगंबर रसूल हैं। सो क़यामत के मैदान पर वो फिर आपकी गवाही देगा अगर आप उसको देंगे। So that's something that you do. The first days of Hajj, पहले 10 दिन कुरान हमारे हदीस और तारीख के किताबों की रोशनी में the first 10 days of Zul-Hijjah, the month of Zul-Hijjah, are one of the most sacred days within the Islamic calendar. पहली Zul-Hijjah से जो है एक कैफियत जो है फरिश्तों की शुरू हो जाती है। Like I said, this is a spiritual journey. This is the inner soul journey that you're taking, a pilgrimage you're taking. Hajj एक pilgrimage होता है। तो ये जो है इसके तारीखों के हिसाब से इसकी फजीलत बढ़ती जाती है। So put on your ihram on the 8th Zul-Hijjah, first day of Hijjah, you're going to put on your ihram, pray 2 rakats। अगर 8 से पहले आप मदीने पाक से निकलेंगे तो आप पहले से वहाँ एक दफा पहनेंगे तो आपने आके उम्रा करना होगा। They're going to explain that to you. There's some slight details, but nothing to get confused about right now. Okay, the instructors there will let you know, बताएंगे आपको कि भाई आपने आराम अभी क्या किस चीज़ का पढ़ते हैं। 2 रकात आपको नफिल पढ़ने होते हैं, फिर आपको नियत करनी होती है। इन किताबों में नियत मौजूद होगी, ठीक है। ज़्यादातर ये आपको इंग्लिश में भी किताबें, मुख्तलिफ किताबों में भी वो आपको दे देंगे। So there's going to be various forms of how you're going to go along with this. The books is going to go into detail with this. So they're going to go into stepwise with you. One thing is that you're going to go into Mina. Mina के अंदर जो है आपके टेंट लगे होंगे. They're beautiful tents. You have to understand there's going to be millions of these tents, air conditioned only, but sometimes the trip happens. Something happens. Don't lose patience is what I'm saying. You're going to be well treated there. अल्लाह में आपको खाने पीने का महसूस करेंगे कि हम जो है वो किसी को भी आपको mattresses दिए जाएंगे. It's 2014, so you know you're going to be enjoying some things as well. It's going to be a desert, but there's going to be mattresses. There's going to be pillows. So from there you're going to go to आप नमाज़ें पढ़ेंगे. आपको 5 नमाज़ें पढ़नी होंगी. आप अगले दिन जो है वो नमाज़ फजर के बाद जो है आप अरफात के लिए निकलेंगे. अरफात is the main threshold of Hajj. So you have to remember आपको यहाँ तक कि सरकार की तो ख्वाहिश ये थी कि आप जितना भी वक्त वहाँ गुजारें बिलखुसूस ज़ोहर और मगरिब तक आप खड़े होकर दुआएं करें. People don't do that anymore. कुछ लोग लेट जाते हैं, सो जाते हैं. The main purpose was कि आप खड़े होकर आप दुआएं मांगे, वहाँ लोग आपसे दुआएं भी करवाएंगे. Everything's going to be done. You spend the time in Arafat, आप मगरिब पढ़ेंगे. From there you go to Muzdalifah, like I was talking about. It's a very unique experience. Just like he was telling you, you're going to spend the night there and then you're going to leave after Fajr. So we're running out of time. I know people have questions, and then you're going to come back. You're going to have
2 days of throwing the stones. One thing, अगर औरतें ज़ईफ हैं, the stone throwing is an entire, आपने सारी उम्र सुना है, लोग hurt हो जाते हैं. उन्होंने उसको, they made it better. उन्होंने 3 उसके बना दिए. One way traffic, जहाँ लिखा होगा one way, खुदारा please go that one way. It's because people will be coming. आपको चक्कर ज़्यादा पड़ेगा, but it's to save lives. Don't go the opposite direction. It's very synchronized. If you go according to the way they're telling you to go, nobody gets hurt. It's better अगर ज़ईफ है, इमाम होंगे, आपके कुछ दोस्त होंगे, मर्द होंगे, वो आपके तरफ से शरई तौर पर वो कंकरियां फेंक सकते हैं और कोई हर्ज नहीं है, सवाब कम नहीं मिलेगा आपको. So be careful. It's something you can do. You should definitely consider it. Afterwards, they're going to tell you, आप नमाज पढ़ेंगे, आपकी कुर्बानियाँ होंगी, फिर आप पत्थर फेंकेंगे, बाल काटेंगे, you're going to sacrifice your things, फिर आप एक हज करेंगे, आप तवाफ करेंगे. This tawaf it's like Allah subhanahu wa ta'ala saying, welcome. This is your first enormous gift given to you by Allah subhanahu wa ta'ala. First tawaf you're going to make after coming back from Egypt. So make it worthwhile. That is the key. That's a very big key. Haircut, women, they're going to let you know exactly how much hair you should cut. Men as well, there's going to be thousands of barbers there. We won't even, and they're going to actually fight to take you, so be careful. So that'll be a unique experience to see. Sacrifice, as I mentioned, it's very synchronized. The government, you already paid for it, they will take care of it. There's 3 different varieties. पहला बड़ा शैतान, छोटा शैतान, बड़ा अगर आपने खुद भी फेंकना है, जितनी जोर से फेंकना चाहे वो फेंकेंगे और आपको मारने के बाद किसी और को न लग जाए. Be careful, very careful. I've seen people do that. Historical places, मक्के शरीफ के अंदर वो आपको बता देंगे. मक्के शरीफ में आप खुद ही historical जगह पर जा रहे हैं, so आपको वहाँ पर कोई special visit की जगह नहीं होती है. They're going to let you know where they are. मदीना मुनव्वरा की हाज़री, मैं काश मेरे पास वक्त होता कि मैं अपने ख्यालात इस पर इज़हार करूँ कि जिस आका ने हमें ये सब कुछ बताया है, जो नेमतें हमें मिलने लगी हैं, आप उसकी बारगाह में हाज़री देने जा रहे हैं. और 1400 years of scholars have written, from the biggest scholars, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. These scholars have all unitedly written, when you are going to Medina Munawwara, Imam Nawawi has written an entire book on this. You have to have the intention कि आप सरकार की बारगाह में इस तरह जा रहे हैं कि उनकी आप जिंदगी में अगर आप उनको मिलने जा रहे होते हैं, आप उस अंदाज से जा रहे हैं. इनकी गुजारिश है कि 2 अशार में अगर पढ़ लूँ नाज़ शरीफ में, तमाम हज़रात अगर मेरे साथ मिलकर दुरूद पाक का नज़राना पेश करें. सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब अल्लाह. है कलाम इलाही में शम्स दुहा, तेरे चेहरे नूर फिजा की कसम, कसम शब तार मेरा ये था कि हबीब की जुल्फ़े दुधा की कसम, वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिलेगा, किसी को मिला कि कलाम मजीद ने खा इशाह, तेरे शहरों कलामों बता की कसम, मेरे घर
अगरचे गुनाह है हद से सिवा, मगर उनसे उम्मीद है तुझसे रजा। तू रहीम है उनका करम है गवाह, वो करीम है तेरी अता की कसम। अगेन वो करीम है तेरी अता की कसम, तू रहीम है। ये सारी बरकतें हम पर जो नाज़िल होंगी वो खुदा की हैं, लेकिन वो खुदा भी हमें नजर नहीं आता था अगर वो हमें ये रास्ता ना बताते। सो इट इज़ अ ब्लेसिंग कि अल्लाह ने उनको चुना, वो उनके अपना एक एजाज था। हमारे लिए फख्र ये है कि वो हमारे मालिक और आका बने। सो गोइंग टू हिम, इसमें भी किताब में भी लिखे होंगे the Hazri is done, जिस तरह से पाकी का आपको महफूज, you have to keep that in mind। दुरूद पाक का विर्द जितना आप कर सकेंगे वो कैफियत चल जाती है, आप खुद महसूस करेंगे। मक्के शरीफ और मदीना मुनव्वरा में कैफियतों दो किस्म की कैफियतें पैदा होती हैं आप में। They're going to let you know जन्नतुल he gave a detailed description of it। वहाँ जन्नतुल बकी शरीफ पर भी हाजिरी देना है, वहाँ they're going to take you to जबल उहद, there's going to be various different मकाम जो आपको वहाँ लेके जाएंगे। सरकार की जो हाजिरी खुद होगी वो जरूर आप कीजिएगा, और वहाँ पर कुरान पाक की आयतें भी हैं जो आपने इल्तिजा करनी है, जो कुरान और जो मकाम जो इजमाए उम्मत के उलमा ने जो लिखा है ये है कि आपको वहाँ जाके सरकार को सलाम पेश करने के बाद आपको ये अर्ज करनी है कि हमसे गुनाह हुए हैं। अल्लाह ताला ने कुरान के 5वें सुपारे में सूरह निसा में कहा था कि अगर आपने अपने ज़ात पर जुल्म किया गया है तो सरकार के पास आके अल्लाह से तौबा मांगना और उनको गवाह बनाना कि मैं अल्लाह से तौबा मांग रहा हूँ अपने गुनाहों की। मेरा भी सलाम जरूर अर्ज कीजिएगा। आई होप यू ऑल डू, दुआ में भी याद रखिएगा। सेम थिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द मकामात देयर। इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। आई एम रैपिंग अप हियर बट अल्फाज मेरे पास नहीं। आप जबल उहद को भी देख के सरकार ने फरमाया था जो मेरे जबल को, इस पहाड़ को खुशी से देखा करे, प्यार से देखा करेगा, तो मैं ऐसा है कि उसने मेरी किसी प्यार चीज को उसने देखा है, जो उहद से प्यार करेगा मैं उससे प्यार करूंगा। ये बहुत बड़े अल्फाज हैं। सो एवरीथिंग अराउंड यू हैव टू काइंड ऑफ टू सिंक इन कि ये वो जगह है जहाँ रहमत आलम अलैहिस्सलाम ने अपनी a very precious time of his life he spent. So try to enjoy it and try to understand what that means. Is there any final questions? I'm going to do a dua. उस दुआ के बाद जो है questions होंगी, they're going to give back here that's going to have a lot of these names and we have to do it. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة وبارك وسلم. اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب، لك الحمد ولك الشكر، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो. या इलाही भूल जाओ नज़र की तकलीफ को, शादी ये दीदार हुस्ने मुस्तफा का साथ हो. या इलाही गोरती राह कि जब आए सख्त रात तो उनके
प्यारे मुँह की सुबह जा फिजा का साथ हो। या इलाही जब जुबाने बाहर आए प्यास से तो साहिबे को ज़र्श है जुद अता का साथ हो। या इलाही गर्मी महशर से जंबल के बदन तो दामन महबूब की ठंडी हवा का साथ हो। या अल्लाह या अल्लाह या रहमान रहीम, इलाही जो भी हमने नियतें की इलाही अपने फजल व करम से हमारी नियतों को तेरे हक में जो नियत तू चाहता है उस तरीके से हम नियतें बनाए रखें। इलाही उस नियतों में बरकतें अता फरमा। इलाही हमारे लिए जो हमने कदम उठा रहे हैं हज पर जाने के लिए, इलाही जो मेज़बान के तौर पर जो काम कर रहे हैं और जो जा रहे हैं मेहमान बन के जा रहे हैं, इलाही तमाम के लिए मरहला आसान फरमाना। तमाम के लिए या रब्बल आलमीन ये मरहला आसान फरमाना। इलाही तमाम को कामयाबियाँ अता फरमाना। इलाही हम तमाम को सब्र जमील अता फरमाना। इलाही हम तमाम को सब्र से रखना। इलाही हम तमाम की तमाम नेक मुरादों को मकासदों को दुआओं को इलाही अपने फजल व करम से कबूल व मंजूर फरमा। इलाही हम सब के सदक़े में इलाही तमाम बीमारों को शिफाए आजिला कामिला अता फरमाना। तमाम परेशान लोगों की परेशानियों को दूर फरमाना। इलाही तमाम जितने भी हुज्जात जा रहे हैं इलाही उनको रहमत आदम अलैहिस्सलाम के तरीक़ाकार पर हज जो है वो उनका साथ खैर वाफियत लेके जाना, वहाँ रखना और अपने घरों में वापस ले आना। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करम। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही व क़ासिम रिज़्क़ि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन। Dr. Osman, thank you. अब हम अपने आखिरी मुस्के पर जा रहे हैं। ये इस प्रोग्राम का आखिरी, यहाँ पर सारे बैग्स हैं जिसमें आपके तमाम चीज़ें यहाँ मौजूद हैं, आराम बुक्स और दूसरी चीज़ें। كريما ما لفضلك من نفادي يا سميعا يا مجيبا يا عظيما اهدني يا خالق السبع الشداد.